0.0001. ओके, अच्छा चलो आज के पेपर में थोड़ी ख्वारी करते हैं, करें? थोड़ी सी ख्वारी करते हैं। सो do you guys everybody have a copy pencil with you? Yes, because मैंने Yes. सबसे सॉल्व करवाना है आज। सो तुम लोग सबने सॉल्व करके मुझे भेजना है व्हाट्सएप पे। आ जाओ भाई। सारे कॉपी पेंसिल निकाल लो अपने पास। सही है, एक अदर यू शुड हैव अ कॉपी एंड अ पेंसिल एंड अ मोबाइल फोन विद यू हैव टू सॉल्व एंड यू हैव टू टेक अ पिक्चर एंड यू हैव टू सेंड मी। सही है, फॉर एवरी क्वेश्चन, चलो एवरी पार्ट एंड एवरी क्वेश्चन। चलो, एंड ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अच्छा रीड कर लो पहले, इमाद रीड करो प्लीज, इमाद प्लीज रीड द क्वेश्चन। One end of a wire is connected to a fixed point. A load is attached to the other end so that the wire hangs vertically. The diameter D of the wire and the load F are measured as 0.4 and 0.02, 25 and 0.5. For the measurement of the diameter of the wire, state the name of suitable measuring instrument. अच्छा बाय द वे, जो आसान आसान सी चीज़ें, जो कैलकुलेशन वाली चीज़ें वो मैंने सॉल्व करवानी। ओके, सो व्हाट इज द नेम बाय द वे? So micrometer. माइक्रोमीटर। ओके, you can take the vernier caliper as well। चलो, माइक्रोमीटर फाइन। ओके, लेट्स मूव ऑन। How random errors may be reused when using the instrument. यस, So सिंपल। take many readings and find average. टेक मैनी रीडिंग्स। ओके, एंड अच्छा, टेक मैनी रीडिंग ऑफ व्हाट? यू हैव टू रिलेट ना। So of the measurement of the diameter. ओके, टेक मैनी रीडिंग ऑफ द diameter and use the average वैल्यू। सही हो गया, इसकी जस्ट एग्जाम रिपोर्ट चेक करते हैं। ओके, दैट्स 11, we have to go to 22, that's 22. Okay, most candidates realize that random error may be reduced by taking repeat measurements and then averaging. It was important to state that these repeat measurements should be taken at the different places on the wire. Okay, so you have to write the different places on the wire. Common misconception is are reduced by checking the zero error. Okay, fine. So so you can say that take many reading on the diameter. अच्छा हमने ये नहीं लिखा, so you'll only get 1 mark for that. Okay, take many reading of the diameter, reading diameter from the different position of the wire. Okay, and use the average value, and use the average value, average value, fine. Okay, आ जाओ भाई। So now this is a calculation वाला question. Okay, so तुमसे कह रहा है कि you have to find the stress in the wires can be calculated. Okay, these are the two values you have, and चलो आ जाओ भाई, शुरू हो जाओ। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट एंड यू हैव टू सेंड मी द पिक्चर ऑफ योर कैलकुलेशन। सारे पार्ट एक साथ करके भेज दो। डी एस 0.40 प्लस माइनस 0.02 millimeters, okay, and F is 25 25.0 plus or minus 0.5 newtons, okay। So okay, आ जाओ भाई। So just solve it, okay, and इन्होंने और कोई चीज़ आपको ऐसा ऐसे नहीं बताई भी, इसके अंदर डायमीटर दिया हुआ है। ओके फाइन, चलो आ जाओ। जल्दी से सॉल्व कर लो और सॉल्व करके फिर मुझे बताओ कि तुम लोग सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ओके, अच्छा 1 मार्क का अगर कैलकुलेशन है, 2 मार्क की कैलकुलेशन है, ओके, यू हैव
5 मिनट्स टू सॉल्व या 4 मिनट्स टू सॉल्व। चलो, जिसका हो जाएगा प्लीज सेंड करोगे, ओके। अच्छा जी, सो तुमसे कह रहे हैं कि द डायमीटर निकालना है, सिंपल सी चीज़ है कि तुम्हें स्ट्रेस निकालना है। सो 4 एफ तुमने ले लिया, 25, राइट, डिवाइडेड बाय पाई, और डायमीटर तुम्हारे पास है 0.4 एक्सपोनेंट -3, एंड यू हैव टू स्क्वायर इट, राइट। सबने यही किया है, राइट, सबने यही किया है। और जो है ना तुम्हारी जो वैल्यू आ रही होगी दैट वुड बी 1.99 एक्सपोनेंट 8, राइट। चलो, या 1.989 आ रही है, बट यू कैन राउंड इट ऑफ टू 1.99 एक्सपोनेंट 9, राइट। अच्छा जी, जो आपने, अगर तो आपने कैलकुलेशन में कोई गलती की होगी देन यू मे गेट द इनकरेक्ट पावर ऑफ 10, ओके। सो okay, fine. Now, determine the percentage uncertainty in stress. So, the percentage uncertainty in the stress is basically dependent upon the percentage uncertainty of F and the percentage uncertainty in D, right? So, percentage uncertainty in F is basically equal to the percentage uncertainty in F plus the percentage uncertainty in D, but it is the squared, so diameter का तुम स्क्वायर ले लोगे, सही है। और आपके पास जो है 0.02 divided by 0.4 into 100, सही है, प्लस ट्वाइस द पॉइंट, हो गलत हो गया यार, 0.5 डिवाइडेड बाय 25, सही है, और 0.02 इंटू 0.4 इंटू 100, सही है। सो आपके पास आ रहा है 12%, राइट। यहाँ तक तो तकरीबन बच्चों ने सही किया, बट लास्ट वाले पार्ट के अंदर उन्होंने गलती की हुई है, सही है। अच्छा जी, चलो। सो एंड द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे आ गया 12%, सही है। अच्छा, अब इन्होंने कहा है, नबील भाई भेज रहे हैं 0.24, नहीं ब्रो, अभी तुम लोग ये गलत लिख रहे हो यार। अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे, ये देख लो, ये देख लो प्लीज, यहाँ पे आ जाओ, ये बच्चे गलत लिख रहे हैं, ये लास्ट पार्ट यू आर राइटिंग दिस लास्ट पार्ट इनकरेक्ट, ओके। सो अच्छा, देखो उसने कहा यूज द इंफॉर्मेशन इन बी पार्ट वन एंड योर आंसर इन बी पार्ट टू टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विद इट्स एब्सोल्यूट uncertainty, okay. So absolute uncertainty in stress is basically depends upon the percentage uncertainty, right? So तुमने ये फॉर्मूला लगाया एंड डेल्टा स्ट्रेस टाइम्स इट बाय 100, राइट। तुमने ये फॉर्मूला लगा दिया, राइट। एंड 12% तुमने एरर निकाला था। अच्छा, ये उल्टा मैंने लिख दिया, ये डेल्टा ऊपर आएगा, सही है। अच्छा, और टाइम्स इट बाय 1.99 एक्सपोनेंट 8, राइट, डिवाइडेड बाय 100, सही है। और ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा ऑफ स्ट्रेस, राइट। तकरीबन सब बच्चों ने ये काम तो किया है, सही है। तो इससे तुम्हारे पास जो वैल्यू आ रही होगी 1.99 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 100, सो तुम्हारे पास आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 2.3 एक्सपोनेंट 7, सही है। यहाँ तक आई होप सो तुम लोग सबको समझ में आ गया होगा। देखो, द रूल इज दैट यू हैव टू राइट द absolute uncertainty in 1SF, okay? You are not allowed to write in 2SF or 3SF, okay? Candy Bro, you wrote it in 2SF. Gulmina, you wrote it in 3SF. And I think Imad, you also wrote it in 2SF, okay? And this is not acceptable. Or I think So you, 0.2 is 2s. yes, it should be zero point 0.2 instead of 2, right? Clear, na? So, to 2.3 So exponent what did you 7 say can again? be, huh? Can you say again? About Which what? so I wrote 0.2. Is that two significant figures? It's 1. It is like you wrote 2 na, and 2 exponent 8 is incorrect value, right? Because that's not what you're getting, right? Like you Sir, I just, wrote 0.2. okay, ये मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो मुझे 2 दिख रहा है। सो 0.2 इंस्टेड, अच्छा, ओके, फाइन फाइन फाइन, आपने मैसेज किया, ओके फाइन। सो इट यू आपको लिखना होगा 0.2 एक्सपोनेंट 8, राइट,
लेकिन आपने वो गलत लिखा हुआ है ना, आपने वैल्यू गलत लिखी हुई है, सही है, इमेज यू रोट द इनकरेक्ट वैल्यू, राइट। नाउ बच्चों देखो, तुम्हें जो है ना, फर्स्ट यू हैव टू राइट द एब्सोल्यूट uncertainty in 1SF. This is the first thing, right? Now you have to count the number of decimal places it contains. So it contains only one decimal place, right? So your stress should also have the same number of decimal place as well as the same number of power of 10. Okay, so you are not allowed to write 1.99, right? So आपको इसको round off करना पड़ेगा 2.0 exponent 8, right? So they both are in the same power of 10. Okay, this is in 1SF, which is the rule, and this has the same DP as this one. Okay, is that clear, guys? तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन में, समझ पा रहे हो? यस, एवरीबडी इज क्लियर? नाउ आ जाओ, इसको जरा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम्हें, ये देख लो, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट चेक कर लो। लोग, majority of the candidate were correct, आसानी से हो गई, most candidate were able to convert absolute uncertainty, अच्छा this is also correct, significant number not obtaining, okay, okay, the last part, the majority of the candidate knew how to calculate the absolute uncertainty of the stress, however many expressed the answer to an inappropriate number of significant figures, okay, and this is like तुम लोग सबने गलत किया, okay, so you got 1 mark, or you will get 1 mark, look, so this is what you get mark for, but the answer should be in this form, okay? बच्चों क्या ये बात क्लियर हो गई है? इज दैट क्लियर? यस, चलो गुड है, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गुलमीना प्लीज रीड द क्वेश्चन। Define the moment of a force. हम्म, It's the product of force and perpendicular distance from pivot. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance from the pivot, okay, the from the pivot is very important, okay, so perpendicular distance from the pivot, okay, so you have to mention the distance as the perpendicular distance, and it should be from the pivot. Look, although there were many correct definition given, sometime keyword was omitted, okay, for instance it is insufficient to define the moment of the force as being the product of force and the distance of the line of the action of the force to a point, okay, as this does not refer to the perpendicular distance, okay, so perpendicular distance is a key word, okay, bigger candidate, okay, turning effect of a force or else, okay, turning effect of a force is not the definition of a moment, okay, it is just a sort of explanation, so you are not allowed to say that, okay, or else confuse moment and momentum, fine. Okay, आगे आ जाइए please. A thin disc of radius r is supported at its center O by a pin. The disc is supported so that it is vertical. Three forces act on the plane of the disc, as shown in figure 2.1. Two horizontal and opposite forces, each of magnitude 1.2 newtons, acts at points A and B on the edge of the disc. A force of 6 newtons at an angle theta below the horizontal acts on the midpoint C of the radial line of the disc, as shown in figure 2.1. The disk has negligible weight and is in equilibrium. State an expression in terms of R for the torque of the couple due to the forces at A and B acting on the disk. Okay, A and B, okay, क्या करेंगी, क्या फोर्स, क्या वो बनेगा? Yes, what will be the expression? Sir, 1.2 newtons हम use करेंगे Okay, and and मोमेंट, इनके मोमेंट बीच में कपल की बना लिए। distance हम्म, जी तो we're gonna diameter होगा लेकिन इधर सिर्फ R दी 2R लेंगे सर good. So basically, 2.4 R, okay, right? Or you can take, look, 1.2 इधर घुमा रहा है, 1.2 making it move in this direction, right? So 1.2 R plus 1.2 R, so it's basically the total of 2.4 R, right? The moment, okay? Clear? Okay, let's move on.
friction between the disk and the pin is negligible, determine the angle theta. एंगल थीटा। ओके, यस, क्या करेंगे? अच्छा जी, आ जाओ भाई। दिस इज द क्वेश्चन। जरा करो, सॉल्व करो, सॉल्व करके भेजो जल्दी से। पार्ट ए भी करो एंड पार्ट बी भी करो। स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ओके, पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोनों कैलकुलेशन वाली क्वेश्चन है, जरा करके दिखाओ प्लीज। आई विश इट इज विजिबल टू यू गाइस। 2 मिनट लो, 2 मिनट के अंदर प्लीज कंप्लीट करो, क्विक। अच्छा जी, सो देखो सीन ये है कि तुम्हारे पास जो है ना, दीज आर द टू फोर्सेस प्रोड्यूसिंग द clockwise movement, and the component of this force produces the anti-clockwise movement, and in the question they mentioned that it is in equilibrium, right? So this means the clockwise movement equals to anti-clockwise movement. So you can say that, okay? नहीं ब्रो, कैंडी ब्रो, दैट वेरी सिंपल, आप मुश्किल कर रहे हो उसको, सेकंड थर्ड वाले पार्ट को। ओके, सो आपने कहा कि भाई सम ऑफ द क्लॉकवाइज, sum of the clockwise equals to sum of the anti clockwise moment, right? From the same point, and the clockwise moments are 2.4 r, and anti-clockwise moment is 6 sine theta, and r by 2, because this is the distance from the center, and r goes off, so 2.4 times 2 divided by 6, and sine inverse. Okay, so you will get 53 point something, so that would be 53.1. Okay, now, so you use a zero resultant moment to find the torque or to find the angle, and now you have to use the resultant force to find the force, the actual force on the pivot, right? So if you see, कि भाई, these two forces are actually acting in the opposite direction, so they get cancelled out from each other, right? And the only force is acting is 6 Newton on the pin or on the disc, right? So there will be resultant of 6 Newton acts on the whole pin as well, right? Just that's it, क्योंकि equal and opposite direction में लगेगी, right? This will be at an angle of यहाँ से इस तरह से, so ताकि जो है resultant आपका force zero हो सके, and your system will be considered as in equilibrium, right? Is that clear, guys? So this should be 6.0. Yes, it is 6.0. Yes, Candy Bro, is that clear? And Irfan, what about you? Irfan, समझ में आया? Yeah. Okay, look. Many candidates found this part difficult, the last one. The previous part of the question was related to the rotational equilibrium, whereas this was concerned with the translational equilibrium. Okay, translational equilibrium means you have to equate the rightward forces equals to leftward forces, upward equals to downward forces. Okay, some candidate did not elaborate the calculation. Candidate should, okay, did not elaborate, did an elaborate calculation candidate could have realized that this wasn't needed. Okay, you don't have to show anything, you just put the value, and careful reading of the question should, okay, fine, chalo. Okay, let's move on. Okay, chalo, Rayan, can you please read the question? A spring is attached at one end to a fixed point and hangs vertically with a cube attached to the other end. The cube is initially held, so the spring has zero extension as shown in the figure. The cube has weight 4 newtons and sides of length 5.1 centimeter. The cube is held and sinks into the water as the spring extends. The cube reaches equilibrium with its base at a depth of 7 centimeter below the water surface as shown. The density of water is 1000 kg per meter cube. Calculate the difference in pressure exerted by the water on the bottom face and the top face of the cube. Okay, and upthrust and then force. Okay, try these two parts, guys, quick. ये दोनों पार्ट करो जल्दी से, मुझे भेजो. So yeah, this is the explanation, okay, or this is the scenario. दोनों पार्ट तुम्हें दिख रहे हैं. Okay, जल्दी से ट्राई करो, दोनों पार्ट ट्राई करो, दोनों पार्ट ट्राई करके भेजो कि किसका कितना आ रहा है. ओके, आ जाओ. सो तुम्हें पता है कि दैट प्रेशर इज, डिफरेंस इन प्रेशर इज बेसिकली रो जी and the difference in h, right? So rho is the same
Okay, and G is also the same 9.81. Okay, and the pressure would be, so you are basically taking the depth minus the top, right? So the depth is at x at 7 centimeters, exponent negative 2 minus, just subtract it with 5.1, you'll get 1.9, 1 point, right? Exponent negative 2. Okay, ऐसे ही हुआ होगा, right? And from this way you will get 7 minus 1.9. Come on. Okay, so I'm getting 500, exact 500. Okay, so if you guys are getting, Is there a formula for B? Like part B, weight is equals to upthrust plus tension? weight is equals to upthrust plus, if you are using that, but how you can find out the tension in the string? Yeah, I don't know. I'm stuck there. Okay, okay, let's try. Okay, so this is the first part. Okay, the second part says use the answer in A. Use the answer in A. So the pressure difference. Okay, you know that force is equals to, oh, sorry, pressure is equals to force upon area, right? And the difference in pressure gives you the upthrust. Okay, so if you times the change in pressure and the area, so you'll get the upthrust, right? Are you guys getting? So the change in the pressure is 500. The area is supposed to be mm, 5.1 times 5.1. सही हो गया, तो आप उसको ले लो. So 5.1 exponent negative 2 times 5.1, you can square it, you'll get the force. Okay, or you'll get the upthrust. Is that clear, guys? So I'm getting the upthrust as 1.3 Newton, and this is what we have to show. Okay, so that's it. Okay, okay, let's move on. Calculate the force exerted on the spring by the cube when it is in equilibrium underwater. Okay, so which means the weight is downward. Okay, which is 4 Newton, okay, and the upthrust is acting upward, which is 1.3 Newton, okay. So the resultant force will be, when you subtract it, so 4 minus 1.3, 3, 2.7, 2.7, okay. So that would be 2.7, okay, and this will be the force acting on the spring, okay. Now, guys, that clear? पीछे वाले question clear हो गए? Anyone, any problem? ब्रो, स्क्वायर हमने इसलिए किया है कि वो होता है ना, आपके पास एरिया निकाल रहे हो, सो एरिया का मतलब है कि आपके पास जो है लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे, राइट? सो 5 पॉइंट स्क्वायर है क्योंकि ये तो इसकी वजह से, राइट? फाइन, आ जाओ भाई. गुलमीना प्लीज रीड द क्वेश्चन. कौन, गुलमीना कर रही थी? नहीं, रेयान कर रहा था. एक मिनट, एक मिनट. रेयान आगे आ जाओ प्लीज. The spring obeys Hooke's law and has a spring constant of 30 Newton meter. हम्म. Determine the initial height above the water surface of the base of the cube before it was released. Okay, and also the second part, the cube release. Okay, fine. Okay, the second part, the D part is quite difficult. Okay, it will going to be a difficult one. Okay, so just try these three part and इसको मुझे भेजो, quick. Okay. So by the way, the spin constant obeys the Hooke's law. Fine. So F is equals to kx. Okay. You use the formula. Okay. The force is what you calculated as 2.7 divided by the spring constant is 30. Okay. So this way you'll get the x as 2.7 divided by 30. So I'm getting 0.09. 0.09 as the extension. Okay. Or सही हो गया. अच्छा जनाब, इरफान सेंट मी. ओए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट थोड़ी रहेगी उसमें, वो इक्विलिब्रियम पे जा रहा है. सो यू हैव टू चेंज समथिंग टू मेक एक्सेलरेशन जीरो बिकॉज मूविंग इन द इक्विलिब्रियम.
Okay, I'll Sir, show it you. doesn't say equilibrium. No, it is. Look. Oh, I did not see that. Okay, fine. Acha, now, so it's basically 9 centimeter, 9 centimeter. Okay, so this is the 9 centimeter. Okay, and when you subtract it from the original length, which is acha, एक minute, wait. So this means, okay, the determine the initial height above the water surface of the base of the cube before it was released. Height. Mm, base of the water as it was released. Okay, fine. So there you go. So you just need to subtract it with the 7 centimeter. Okay. So you will get the change in length. Okay. When you subtract it from 7 centimeter. सही है. So आपके पास आ जाएगी change in length, and that change in length it would be height above the surface. Okay. So 2.0 centimeter आपके पास आ जाएगी. Clear हो गया? So this is what you have to do. Okay. अच्छा जी, and in this part the cube is released from the spring. Okay, determine the initial acceleration. Okay, so initial acceleration के लिए you have the force. Okay, so the force is 2.7. Okay, and F equals to ma. The force is 2.7 and the mass is 4 divided by 9.81 because it is given in the weight. Okay, so into 9.81 and divided by mass, which is 4. Okay, so that will give you the acceleration as 6.6. Okay, and now the last part, which most of you guys did incorrect, and that is okay, describe and explain the variation, if any, of the acceleration of the cube as it sinks in the water. Okay, so as it sinks in the water. Okay, so basically इन्होंने बता रखा है that as it moving inside, so the acceleration reduces and it achieve equilibrium, which means the acceleration goes to zero, right? So over here you have to write, okay, so the up thrust, which depends upon the dimension of the body and the density of the liquid. Okay, so you are not changing both. So up thrust and also the weight is not changing. So up thrust and the weight remains the same. Okay, पहली बात हो गई. But as it sinks in, so its velocity increases, which increase the drag force or viscous drag. Okay, and it become equal to the upthrust and the weight. तो वो आपके पास resultant zero कर देगा. सही है. So but drag increases with upthrust, sorry, with the speed um which combine with um sorry, upthrust up mm, which combine with the weight and become equal to the upthrust. यार ये क्या हो रहा है यार? upthrust. ओके, चलो, दैट्स इट. ये कंप्लीट हो गया. आ जाओ भाई. सही हो गया. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसकी लास्ट पार्ट. ओके, सो So, extension of the string, many candidates found difficult to use their calculation extension to determine the initial height of the cube above the water. Some candidate drew helpful sketch on the diagram to better vision. Okay, fine. Acha. So the last part says some answers appear to be confused the acceleration with the velocity. Stronger candidate realized that the acceleration would decrease, but were often unable to.
gave a supporting explanation for the candidate need to explain there is an increase in the viscous force acting on the cube. Many just refer to the pressure of the water increasing or made vague references to the obsessed. Other misunderstood the equation and thought that they were being asked to explain what happened to the cube move from the air to water. Okay, सही हो गया, चलो क्लियर है। आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। यस गाइस, स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन लिख के देनी है सबने। एवरीबडी हैव टू राइट द डेफिनेशन फॉर द स्टेशनरी वेव, जल्दी से लिख के दो प्लीज, क्विक। यस, बल्कि लिख के भी क्यों दो, बता दो ना तुम लोग। मैं पूछ लेता हूँ, एक मिनट, रुको रुको रुको। ये बात बताओगे? यस, ये बात। Sir, when a coherent wave source with constant speed, frequency move and they move in opposite directions, like overlap forming anodes and cathodes. अबे I ओए। mean, antinode and node. अबे, ओके फाइन। ओके गुलमीना, आप क्या कहोगी? Sir, when two waves, uh, sorry, क्या कहते हैं, when two waves have the same frequency and wavelength, traveling opposite directions and क्या कहते हैं, interfere with each other. ओके, एंड इरफान, व्हाट अबाउट यू? इरफान को एक। Uh, the conditions required for the formation of a stationary wave, right? यस। It has to be between like two fixed points, and they have to have same the same frequency. I think I'm not sure. ओके, एंड Rayan, what about you? Sir, they have to have the same amplitude and frequency, And and they have to be traveling in opposite directions. okay, and there should be one more thing. And they superimpose. Okay, yes, ये दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन। एक अब आप लोग जो है ना इनकम्प्लीट बता रहे हो। ओके, सो इरफान, यू वोंट गेट मार्क ऑन द डेफिनेशन यू टोल्ड मी। ओके, एंड मे बी इमाद आपका एक नंबर कट जाए, सब लोगों का एक नंबर कटेगा। ओके, सो आप बोलोगे कि भाई व्हेन। Sir, this is stating for the conditions of the formation of stationary wave, not the यस, definition. यस, द कंडीशंस आर इनकरेक्ट दैट यू टोल्ड मी। when the two Oh, waves okay. when the two waves of the same type, okay, having same frequency, speed, wavelength, and amplitude and moving in the opposite direction, okay, direction, and superimpose, and superimpose की बजाय overlap कहते हैं, ज़्यादा बेहतर word है। overlap, superimpose, overlap, superimpose में I think you Sir, may get mark law. Yes, and you may is my lose one mark. mark detected because of the same type? नहीं नहीं, because you didn't mention the opposite direction. The same type is I think not required, but the it is actually required, but maybe they won't consider maybe, but the moving in the opposite direction is the key, right? If you miss that, so maybe you won't get mark, okay, or one mark, okay. Let me show you. Let me show you the definition, the condition कि वो क्या कह रहे हैं, okay. Look, अच्छा, by the way, हाँ सही आ रहा है। Okay, so two wave, okay, two wave traveling
at the same speed. Okay, so if you wrote the same speed, which mean okay, fine. So in the opposite direction and overlap, okay? And then wave have the same type, okay? You have to mention they're mentioning have the same frequency and wavelength, okay? Fine. Now, they're not mentioning the amplitude, but the amplitude is key over here. Okay, look, most candidate is correctly stated that the stationary wave can be formed from the two progressive wave of the same frequency traveling at the same speed. However, many candidates did not mention that a wave should have to travel in the opposite direction and overlap. Okay, a common misconception is overlapping constant have a constant phase difference. Okay, have a constant phase difference. चलो सही है. सही हो गया. So it's better to use overlapping, the concept of overlap. Okay, so and yes, so that's why I'm saying कि सब लोग एक एक मार्क लूज कर रहे हो. Okay, चलो आ जाओ भाई. So now they're saying कौन है क्वेश्चन, कौन रीड कर रहा है भाई? गुलमीना प्लीज रीड द क्वेश्चन. A horizontal string is stretched between two fixed points, x and y. The string is made to vibrate vertically so that a stationary wave is formed. At one instant, each particle of the string is at its maximum displacement, as shown in figure 4.1. P and Q are two particles of the string. The string vibrates with a frequency of 40 hertz. Distance xy is 2 meters. State the number of antinodes in the stationary wave. Antinode. Okay, how many? देख के पता चल रहा है. There is a very easy question. 1, 2, Uh, 2, 3, 3, 4, 5. 4 and 5. Good. आगे आ जाइए please. Determine the minimum time taken for the particle P to travel from its lowest point to its highest point. Okay. What do you mean by its lowest point from its highest point? How many wavelengths will be there, or how many time period will be there? Yes. Can you tell me, please? Sir, access से जो नहीं Any idea? नहीं sir. No idea? Okay. अच्छा जी. Ryan, do you have any idea? Sir, What? इसमें Yes. पर frequency का और वो time period वाला formula लगा कर देखेंगे. वो तो लगा लोगे, उससे आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, राइट? बट दे आर जी. सेइंग बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट जो टाइम टेकन है, व्हाट विल बी दैट टाइम टेकन? विल दैट बी अ फुल टाइम पीरियड और विल दैट बी डबल द टाइम पीरियड, हाफ द टाइम पीरियड, क्वार्टर द टाइम पीरियड, वन फोर्थ ऑफ द टाइम, व्हाटएवर? क्या होगा? ये बेसिक है, ये इंपॉर्टेंट है. अच्छा वो नहीं समझा रहा सर. वो नहीं समझ में आया, बिकॉज यू विल गेट वन मार्क फॉर दैट कैलकुलेशन जो कि आप कर रहे हो, बट ओके फाइन. एंड अच्छा, और पूछते हैं रियान, आप क्या कहते हो रियान? एनी आइडिया? Sir, it'll be half the time taken. Any reason for that? Sir, because it takes quarter of the time to go to zero amplitude and quarter of the time to get back to the lowest amplitude, and it takes the same to go back to the full amplitude, like Okay, the normal wavelength. okay, fine. So basically, the point over here, मैं सुन रही हो ना? The point over here is that अगर आप यहाँ पे खड़े हो, सही है, and this is your complete oscillation, okay? When you return back to its original position, and this is your time period, okay? But they are asking for the lowest point and the highest point, which mean half the wavelength or half the time period, okay? So that's why. Is that clear? जी सर. सही हो गया. So आपने कहा कि भाई अच्छा जी. So time period is equals to 1 over frequency, and time period is equals to 1 over 40. So that will give you the period of how much? 0.025. 0.025. Okay, and you have to divide by 2. So to get it, the half the time period, that will be 1.0125. Okay, so that would be 0.013. Fine, चलो हो गया, आगे आ जाओ. Yes, Gulmina. State the phase difference with its unit between the vibrations of particle P and of particle Q. Okay, sorry. Yes, क्या कहेंगे आप?
Yes, Gulmina, any idea? कमान कुछ तो बोलो यार. एंड ओके आपको नहीं है. सो अच्छा. इरफान, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू? It's it's out of his red. Like the value. Oh, the value. No, I'm not sure. ओके. एंड इमाद, आप कुछ बता सकते हो? Sir, I think zero. Why? Between P and Q. Yes, zero. So I'm not sure, but I'm pretty sure it's zero. ओके है. एंड रेयान, आप क्या कहते हो? रेयान, व्हाट अबाउट यू? Sir, can you show the हाँ diagram? हाँ. दिस इज द डायग्राम. Sir, यस. 90 degrees. 90 क्यों भाई? 90 डिग्री क्यों? बच्चों, they mentioned that this is a stationary wave, and in this stationary wave, you should remember that if the two particle lies inside one loop, so the phase difference always considered as zero. Okay, and if the two particle lies in the two different loop like this one, कि P एक loop के अंदर है and Q is in the other loop. Okay, so the phase difference will always be 180 degree, and it is like हमेशा this should be like this is something that you should remember every time. Okay, clear हो गया? Yes. Yeah. Okay. Imad, is that clear? Yes. Okay, so the speed of the progressive wave along this string. Okay, do we have anything? The distance. Okay, we have the distance given. Okay, you can use the distance to find the wavelength. Okay, and you can use the speed formula. Okay, so we have 1, 2 and 2.5 wave in 2 meters. Okay, so we have 2.5 waves in 2 meters. Okay, we want one wave distance. Okay, so that would be 2 divided by 2.5. Okay, so I would get 2 over 2.5, that would be 0.8. 0.8. Okay, so the wavelength is 0.8. Okay, now v equals to f lambda. F lambda, and then the speed is to be found. The frequency is 40 times it by zero point 0.8, so I'm getting 32. Okay, 32 centimeters per centimeter per meter per second. Okay, fine. चलो. एंड आज भी अच्छा, इसको अगर हम चेक कर लें. Sir, हाँ can you go हाँ. back to part B? यस. I mean, part two, part two. Part 2, this one. Yeah. Sir, Hmm. it says lowest point to and highest point. We can Uh-huh. take two antinodes, right? And it's half a wavelength. Can we ओए use ओए that ओए method? ओए ओए. टू टू एंटी नोड्स लाइक दैट. ये यहाँ से यहाँ Yeah, तक. like no, no, no. अच्छा. From P to and the antinode next to This. Q. Yes. Okay, basically yes, but actually the concept is in the stationary wave, the wave does not move that way. Okay, the wave only oscillate up and down. Na, getting? So that's why we don't like I don't, or I cannot teach it that way because it will make it a stationary wave, right? समझ progressive wave, समझ रहे हो ना भाई आप? But yes, the concept is correct. मतलब वो stationary wave, progressive wave के हिसाब से वो concept correct है. Stationary wave के हिसाब से this is an incorrect concept, by the way. Clear? Okay. सही है. So in a stationary wave you should have to consider the particle is moving up, and then it will come down, and then it will go up, and so on. Fine. Chalo, this question is done. Okay. Okay, guys, what about the definition of the Coulomb? Yes, Coulomb. Rayan, can you tell me the definition of Coulomb? Yes. Coulomb is basically the unit for the charge, and you know that the charge is basically
I times T. Okay. Yes. Yes, Ryan. Sir, the product of current and time. Bro, come on. Yeah. Okay. They are asking for the Coulomb and not the charge. What you say then? Sir, I don't know. Don't know. Okay. Gulmina आप क्या कहती हो? Yes. सर उनके यूनिट्स कब लिखेंगे? That कैसे? मतलब like for current ampere Mm-hmm. and for time second. Okay, so चलो अच्छा आप ऐसा कह रहे हो फाइन. इरफान आप क्या कहते हो? इरफान what do you say? Yes. Uh, and Q is equal to IT, but I'm not sure. It's just for coulombs, right? I Mm-hmm. was thinking of saying rate of flow of current or No, something. I'm rate of not. flow of current is nothing. It's an incorrect thing. It's rate of flow of charge makes a current, but rate of flow of current is nothing. Okay. इमाद आप क्या कहते हो इमाद? Sir, ampere per second. ओए per second you? It's not in the Sir, division. ampere. I don't know, Second. ampere second. Ah, okay, so the look, the coulomb is the unit for a quantity charge, okay? So you should have to define it in term of the quantities and not in term of the in term of the units and not the quantities, okay? So it should be defined as the ampere seconds, okay? You have to be very careful in the definition, okay? And you guys are losing a lot of mark in the definition and in the explanation parts, okay? So look, over here, precise definition was needed. Some candidate incorrectly stated that the coulomb is the current multiplied by the time. This is not required. Okay, such candidate need to appreciate that the units are defined in term of the other units or not in term of the quantity. The weakest candidate simply said that the coulomb is a unit of the charge. Okay, fine. So ये भी नहीं कहना है बाकी. Okay, this is not the part of the syllabus. Okay, okay. What is meant by the electrical current? Yes, guys. Irfan, what is the definition of electrical current? Hmm. Any idea? No idea. Okay. Imad, what is the definition of the electrical current? Sir, charge per unit time. Charge per unit time. Okay. और गुलमीना आप क्या कहते हो? Rate of flow of charge. Rate of flow of charge. Okay. And Rayan, what do you say? Rate of flow of charge. Okay. चलो. And आगे आ जाओ. ये majority of the candidate knew the electrical current as the flow of charge carriers. Okay. So इन्होंने they're not considering the rate, but it should be the flow of charge carrier. Um, flow of charge carrier. They're also saying the flow of charge carrier. Fine. चलो. आगे आ जाओ. Yes. Can you guys tell me? So, इन्होंने कहा है कि metal wire has a length L and a cross-sectional area A. Okay, the current in the wire N is the number density of the electron per unit volume. V is the drift velocity. E is the charge. Okay. So, in term of the total charge. Okay. So, in term of the total charge, can anybody tell me the expression for the total charge? Yes. Rayan. Rayan, any idea about the total charge? Yes, Rayan. Sir, with Like sir, the we total use charge? I equals to No, I not equal to I. A and V. I equals to A and V is basically for the current, various charge in this part or in this equation. Yes, Sir, can I say? I think I knew please. it. Sir, it's number of electrons times the elementary charge. I'm not sure.
Number of electrons times elementary charge. Okay, you were saying that it should be something more. Okay. Gulmina, any idea, Gulmina? Because look, guys, उन्होंने ये बताया हुआ है कि you have to give them in this form. So Imad, you included elementary charge, which is E, times the number of charge carrier, which is N. Okay, but you're not including L and A. Yes. सर फॉर्मूला भूल गई हूँ लेकिन चार्ज और करंट की हम वो फ्लिप करेंगे. Are we gonna switch their positions? Using this equation. जी. अबे नहीं. Bro, नहीं, मैं कोई guys. फॉर्मूला था भूल गई हूँ. Okay. Guys, look. So the total charge that would flow would be N times the elementary charge. This is the first thing, okay? Like the total number of charge carrier that the metal wire is giving you as a conduction, okay? And E is basically the charge on any one unit. But since the wire has a certain length and certain cross-sectional area, right? So you also have to multiply by L and by A as well to get the total charge that is ejected from this much of length of the wire having a cross-sectional area A. Okay. If you only write NE, so this only shows that you are considering a point, okay, and through that point how many charges are passing, तो वो आपने बस देखना है, okay. So वो ये गलत हो जाएगा. सही हो गया? सही हो गया? Is that clear, guys? Is that clear, guys? Yes. So अच्छा जी, इसकी तुम्हें मैं दिखा देता हूँ. Difficulty other candidate tends to make unsuccessful attempt. Backward. Okay. चलो आ जाओ भाई. Use your part window. Okay. Can you guys derive this definition? Derive this thing? Anyone? Yes, can anyone derive this thing? Yes. Okay. If you have कोई भी नहीं है इमाद ड्राइव हो रहा है इमाद I don't know this. why okay and Rayan, what about you? No, sir. No idea. Gulmina, this is नहीं very सर. simple. This is very simple. Irfan, you also have no idea? Bro, if you just derive this equation, okay, total charge equals to NELA, right? So just divide the whole equation by T because you know that the charge, if you want to make the charge into current, you have to divide by T, okay? Or you can also say that Q equals to IT, right? So you can just write that way. Instead of Q, the total charge you can replace it Q equals to IT, right? And you can put it IT equals to NA LE, right? And just shift T to the other side. So this become NA instead of okay, L will be L divided by T and E. Okay. So it become I equals to N A. L over T is basically V, the drift velocity, and times it by E. Okay. Is that clear, guys? Yes. Chalo. How many Sir, what is parts? Okay, the L over last part. T? L over T. Distance upon time, bro. Speed. Uh-huh. Okay. They just mentioned the length in terms of L, so that's why. Okay. Okay. The last part. Okay. So now they're giving you part C. Metal wire is damaged. Okay, the resistivity of the metal wire is unchanged, but the resistance, but the cross-section area of the is reduced over a length of 3 millimeters. Okay, fine. Ha ha ha. Okay, the wire has a D diameter, and the diameter is this at the cross-sectional area. Okay, the current in the wire is 0.5 A. Fine.
द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके गाइस, बाय द वे, इसके अंदर जो है वो तुम्हें पता है कि करंट तो सेम ही रहने वाला है बिकॉज इट इज इन द सीरीज सेक्शन, राइट। एंड तुम्हारे पास ये आ जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफरेंट होगी ड्यू टू द डिफरेंस इन दोस थिंग्स। सही है। सो अगर हम इसको कर लें कि हमारे पास जो है आई ओवर एन ए और क्यू is basically equal to drift velocity divided by I over n a q. Okay, is basically the drift velocity for x and sorry y and the drift velocity for x. Okay, so you can cancel I and I, Q and Q, and N and N because they are the same. Okay, and this is for Y and this is for X. Okay, so you can simplify it to make the drift velocity of Y divided by the drift velocity of X equals to the area of X divided by the area of Y. Okay, now so the area of X is basically depends upon the diameter. So you can further expand pi d square over or just write d square of X divided by the d square of Y, right? Because pi and 4 everything will be cancelled out, right? So the diameter of X is d and the diameter of Y is 0.69 d. Okay, so x is just d squared divided by 0.69 d and whole thing square, right? So just solve it for, you'll get the ratio. Okay, so 1 over 0.69 squared. Okay, so I'm getting the ratio as 2.1. 2.1. Let's see, 2.1. Okay, fine. चलो आगे आ जाओ भाई। Sir, हम्म। can you please show the derivation? कौन सी? ये वाली? जी, वो मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी। ओके, चले आगे चले। जी सर। ओके, अच्छा जी, चलो आ जाओ भाई। Ryan, can you please read the question? This part. The main part of the wire cross section X has resistance per unit length of 1.7 exponent -2. For the damaged Okay, length of wire, calculate the resistance per unit length and the power dissipated. fine. Resistance per unit length. So, what's the formula you use? What will be the relation you use? Yes, Ryan. Any idea? Also, resistivity. Okay. Okay, you can. Okay, fine. Resistivity, आप कह रहे हो कि भाई resistance is equals to rho L over A. Okay, and they're saying resistance per unit length, so which mean R over L is basically required, and resistance over A is what you have to find out. Okay, clear na? Okay, so for the damage length of the wire, calculate. Okay. Mm-hmm. Okay, so the resistivity is 1.7 resistance per unit length. नहीं नहीं नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होगा, बाय द वे हम फंस जाएंगे इससे बिकॉज वी डोंट हैव दैट। अच्छा, बाय द वे दे सेड दैट द मटेरियल सर्किट, ओके द रेजिस्टिव, ओके आई थिंक ये बोथ दोनों वायर जो है वो सेम है। सही है, सो वी कैन कंसिडर दीज थिंग एज सेम। सही है, तो उससे वजह से हमारे पास resistance per unit length, okay, and the total length is the resistance. Okay, the main part of the wire with a cross section X has a resistance per unit length as this much. For the damaged length of the wire, calculate the resistance per unit length. Okay, do we have the length as a 3 millimeter की length है? Okay, and okay, we have to use the ratio. So हम ये कर सकते हैं that
So let's say this is something, let's say X. Okay. So X, which is the resistance per unit length of wire X times it by A of X is equals to the resistance per unit length. I am supposing it as X, okay, and this is Y, right, and times it by AY, okay. So we found out that the AX over AY, okay. So in the previous case, we find out that AX over AY has a ratio of 2.1, right? And this will give me XY over X of X, okay? So इससे हमें ये पता चल जाएगा. ये थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है, ओके. नाउ यहाँ तक आ गया. अच्छा, नाउ अब क्या कर सकते हैं कि ax which is the area of x divided by the area of y gives me or basically equal to 2.1, okay, and this become or this will be xy over xx, okay. So xy over xx, okay. So now they mentioned that the um कहाँ गया? The main part of the wire has a cross section x and has a resistance per unit length. Okay, so we consider the resistance per unit length of x is xx. Okay, which is 1.7 exponent negative 2. So if you multiply 1.2 and 1.72 exponent negative 2 together, okay, so that will give me x of y. Okay, clear? जरा please calculate करो कितना आता है. Let me see. 1.7 exponent negative 2 times 2.1. I'm getting 30, 35.7 exponent negative 3. So I can take it 3.6. This is a difficult question, by the way, okay? Maybe you may get stuck with it, okay? Exponent negative 2. So okay, Ajo. So I think that is 3.6. Okay, fine. 3.6. We are getting it correct. The power dissipated in that damaged length. Okay, we know the current, we also know the resistance per unit length. So we can find out the power, by the way. Okay, resistance per, okay. So power is equals to I square R, right? So the current is 0.5 ampere, okay? And okay, the current and the resistance is to be found. Okay, we find out the resistance per unit length of x. Okay, so the resistance per unit length of x is 3.6 exponent negative 2, right? And we also know that the resistance is the length is 3 millimeter. So we can find out the actual resistance. Okay, so this is basically equal to the resistance per unit length, right? So if we just multiply it with 3, okay, so just multiply it with 3 exponent negative 3 to get the actual resistance. Okay, guys, ये वाला portion clear हुआ? Is this portion clear? Yes. Yes, guys, is this portion clear? You found out the resistance per unit length as 3.6. Yani for 1 meter, you will have the resistance of 3.6 exponent negative 3. So if you have 3 millimeter of length, so how much will be your resistance? Is just a cross multiplication, okay? So 3.6 exponent negative 2 into 3 exponent negative 3. Okay, so I am getting the resistance as 1.08 exponent negative 4. Okay, so you can just take the current as 0.5 squared. Okay, and the resistance as 1.08 exponent negative 4. Okay, and that would be zero point 0.5 squared into answer. So the power dissipated is 2 point, okay, 2.7 exponent negative 5. Negative 5. 10. Is it correct? Yes. Okay, last part. Imad, can you please read the last part? The diameter of the damaged length of the wire is further decreased. Assume that the current in the wire remains constant. State and explain qualitatively the change, if any, to the power dissipated is in the damaged length of the wire. Okay. Any idea? I No. square R है. No idea? Come on.
Sir, if the areas decrease, the resistance will increase. Okay. And if the resistance will So increase, so power will also increase. yeah, Okay. So decrease in the resistance increases the um increases the decrease, sorry, decrease in the diameter. Diameter increases the increases the resistance, which will increase the power. Okay, chalo, that's done. Okay, आज अभी last question. अच्छा जी. So, Irfan, can you please read the question? The stationary nucleus decays by emitting a beta particle to form a nucleus of carbon-13. So, it is beta positive, means leptons. Okay. State the number of nucleus in the X. Yes, Irfan. Number of proton and number of neutron. So beta in the beta plus decay, you know that proton absorbs the electron nearby, and it emits the beta positive and a neutrino. Okay, so yes, what will happen? So it's 5. Okay, so what proton number? Proton will become 5, and the neutron will be 8, right? 6. 6 or 8? Yeah, yeah, yeah. 8. 8, 8. Okay, let's move on. The carbon-13 अच्छा nucleus has एक a मिनट, mass of wait. If they're saying that this is 6, so which mean this should be 7. So from 7 it reduces to 6, right? And not 5. Okay. And um okay, so this should be 13, na? So 7 minus 13 give you 5. Okay. sir, 6. Sorry, 6. Yes. 7 minus 12 gives you 5. Okay, fine. So this is the incorrect. Okay, let's move on. The carbon-13 nucleus has a mass of 2.2 into 10 to the power negative 26 kg. Okay. Kinetic energy as a result of the decay process is 0.8 uh, Mega electron volt. mega. So, Okay, yeah. Calculate the speed of this nucleus. yes, what will you do? We have B and which I'm not sure. Okay, Imad, do you have Oh, any idea? तुमने kinetic पूछा था? energy. Huh? Kinetic energy is given, so Okay. it's half mv square, right? And we just So need to like what will what will you take this as? This is not in joules. You cannot use it in the direct formula of kinetic energy. oh Yes, इमाद पूछा था आपने, क्या वो समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे होगा? Sir, do you multiply 0.80 by the elementary charge? Okay, and then Then you convert mega into normal, I think. okay, Like and then 6, I think. Then okay, you can take it as the joules अभी वो हाफ एम वी kind. स्क्वायर से इक्वेट होकर सॉल्व हो जाएगा ऐसा? Yes, I think. Okay, Gulmina, do you have any idea, Gulmina? थोड़ा सा सर, कैसा क्या आइडिया है? वही क्या? जो सॉरी इमाद ने जो बताया, अबे शर्म नहीं आ रही? कॉपी एंड पेस्ट कर रही हो?
Sorry, sir. इसका मतलब you don't have any idea. Okay. And Ryan, do you have any idea, please? So you No, should sir. you should know that electron volt to joules conversion. Okay, electron volt is basically the smaller unit for the energy. Joule is the larger unit. Okay, one electron volt required, or one electron volt is basically equivalent to 1.6 exponent negative 19 joules. Okay, Ahmad, this is not the elementary charge. This looks like the value of the elementary charge, but this is not the elementary charge. Okay, this is energy. Okay. And for 0.8 mega electron volt, for mega you can just put exponent 6. Okay, so you have 0.8 exponent 6 electron volt. So how much energy will be there in joules? Okay, so you just do the cross multiplication. Okay, so 1.6 exponent negative 19 into 0.8 exponent 6. Okay, and this will give you the energy in joule, and you can now equate it with half mv square, half mv squared. Okay, so now इसको आप ऐसे ही ले लो नीचे. सही है. And half mv सर, square. Yes. सॉरी आप फिर ये फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं भाई. क्या लेकिन इसमें क्या समझ में नहीं आया? पूरा. आए है. ओके ओके बता दूं. ओके फिर सॉल्व करने दो मुझे, सुबह बता दूं. ओके. अच्छा अब आपके पास आ रहा है. So you just divide it with the mass. The mass of the nucleus is given as 2.2 exponent negative 26 kgs, and you just root down the whole thing. Okay, and इसकी value निकाल लेते हैं. Under root 1.6 exponent negative 19 into zero point 0.8 exponent 6 into 2 divided by 2.2 exponent negative 26. Okay, so I am getting 3.4 exponent 6 as a speed. Oh man, shits. Mm-hmm. Okay. AS यूरो. ओके. सो 3.4 सही आ रहा है. चलो. अच्छा देखो, इसके अंदर हम ये करते हैं. हमें देखो, if you move the electron, if you move one electron, okay, you know that the electrical energy has a formula q times change, q times potential difference. Okay, the charge times the potential difference. Okay, this is what you guys learned in your O levels, right? So if you move a charge of one electron, which has a value of 1.6 exponent negative 19. So if you move that elementary charge of one electron by a voltage of 1 volt, okay? So the energy that, since you're moving the charge of one electron to 1 volt of the energy or the potential difference, so the moving charge particle will have the kinetic energy equivalent to 1.6 exponent negative 19 joules. Okay, guys, is that clear? This is the concept of the joules, and हमने कहा that this is, let's consider this as one electron volt, which means one electron is accelerated by a potential difference of 1 volt. Okay, so this much amount of energy it required for that, or it will have after when you accelerate it. Okay, so हमने electron volt का एक smaller scale बना लिया, right? Now if you have now अब आपको conversion factor याद होना चाहिए कि 1 electron volt is basically equal to 1 joule, 1.6 exponent negative 19 joules, right? So अब आपको दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का उसने बात की हुई है, राइट? सो यू कैन यूज हाफ एम वी स्क्वायर डायरेक्टली, बट हाफ एम वी स्क्वायर रिक्वायर्ड द एनर्जी इन जूल्स and not in mega electron volt or electron volt, right? So we first have to convert the energy into joules, right? And for the conversion of the energy into joule, the simple thing is the cross multiplication. That is 0.8 mega is something that you know, as exponent 6, right? So zero point 0.8 exponent 6, this is mega electron volt of energy that you have, and you want it to convert into the joules, and you have to multiply it by 1.6 exponent negative 19 to make it to convert it into joules, right? So once you are done with that, you can equate it easily with half mv square. Okay, is that clear? कुलबीना समझ में आता है? जी सर, समझ आ गया. पक्की बात है? नहीं अभी भी ऊपर से गया? सच्ची नहीं, नहीं बताओ. समझ आ गया. ओके फाइन. अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल कैन नॉट बी इक्वल टू द total energy of the decay, because there will be some energy release in the form of like there will be some energy
uh, carried by the neutrinos in this reaction, right? सही है, सो हम ये कह सकते हैं कि भाई some of the energy uh, is also carried away by the neutrinos. Okay, is that clear, guys? Is that clear? Okay, so the paper is done. So we did October, November 2017. Please note down the homework. You have to try uh, November 2017 21 tomorrow. Okay, this is your homework. Actually, by the way, from the class participation that you guys did तुम लोग के जो है ना your standings are जरा सुन के जाना please. तुम इमाद मियाँ तुम जो खड़े हुए हो यू आर एट अ वेरी हायर बी और अ लोअर ए. सही है. ओके इमाद, सही हो गया. बी or a higher lower A, right? Because you are still weak in you may be lacking in some of the definition and one or two difficult part question. Okay, so if you done that, so you may get a good A. Okay, clear. And the second is Gulmina. आपका जो आ रहा है हिमाद, Gulmina, you are in B. You are in B. Okay, you are in B because you didn't know some of the calculation and some of the theory उसकी आपकी गलत हो रही है, but you can improve it to A if you just do certain calculation pretty much. Okay, कुछ कुछ चीजें जो तुम लोग ने बहुत frequently गलत की, जैसे maybe this question Imad I think did this one correct, the rest of you guys have no idea. And तुम लोग ने maybe चलो this part is quite difficult, so maybe आप ये assume कर सकते हो that you may lose 1 mark for that. Okay, and Acha ji, you guys don't have any knowledge about this part, okay? So you may lose 3 mark easy 3 mark, okay? And fine, ये हो गया हमारा definitions, bro. Definitions में you guys are very भैया मैंने देना है मॉक वगैरह मैंने लेना है तुम लोग का. प्रॉब्ली आई विल बी टेकिंग द मॉक इन लाइक द फोर्थ वीक ऑफ दिस मंथ. अप्रैल के आखिरी में हम ले लेंगे, राइट? सो और फिर उसके बाद जो है ना वो हम हमारे रेस्ट ऑफ द पेपर्स हमने करने हैं, सही है. एंड यहाँ पे देखो ये दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. You should not lose a mark in, right? Maybe Gulmina, you are losing the mark over here, which is like not good. And तुम लोग की definition में, guys, definition में you are lacking. सही है. सो इस वजह से प्लीज बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल. सही है. ये मैंने बता दिया गुलमीना का. गुलमीना यू कैन इम्प्रूव टू ए इफ यू डू सर्टेन कैलकुलेशन प्रॉपरली, राइट? देखो अगर तुम्हें इम्प्रूव करना है सो यू हैव टू सर्च आउट फॉर दोज नॉट जो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते. यू हैव टू सर्च आउट फॉर दोज क्वेश्चन ताकि आपके जो है ना उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए. गुलमीना, इज दैट क्लियर? गुलमीना, आपको काम समझ में आ रहा है? सही है. जी सर, मैंने फिर टॉपिक को उस बीच में करूंगी ना देखो फॉर जो जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है ये वाला आपसे नहीं हो रहा, राइट? अब आप जाओ इसके टॉपिकल उठाओ और उसके अंदर जिसके अंदर ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना जस्ट ट्राई देम आउट. ओके, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कर लोगे यू विल हैव अ फेयर आइडिया जो मैंने समझाया है. ओके, अगर नहीं करोगी देन आप भूल जाओगी. ओके, सही सर. सही हो थैंक यू. गया. एंड इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, अच्छा इसके इसके थोड़े से क्वेश्चन कर लेना तुम लोग प्लीज. ये दो टॉपिक हैं जो तुम लोग की काफी वीक हैं. ओके, सही हो गया. सो गुलमिना यू आर देयर एंड रयान आप बहुत ज्यादा वीक चल रहे हो, कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही आपकी, है ना? ऐसा ही है. रयान जरा सच सच बताना प्लीज. No, sir, I had the mock, so I already practiced. How many papers you practiced? So I did 3-4 papers of P1 and 2 papers of P2. Come on bro, that is not like कुछ भी नहीं है, ये नॉनसेंस है. एंड इसके अलावा कितने प्रैक्टिस किए? नथिंग मोर देन दैट. Sir, like just normally the ones that you give homework, I do. मुझे तो आज तक कोई भी नहीं मिला. ब्रो Sir, यू I आर sent. बेटा दो क्वेश्चन, दो पेपर भेजे थे, 3 पेपर भेजे थे जिसका मैंने आंसर किया है आपको. यू आर ब्रो, यू आर लिटरली स्टैंडिंग एट सी. ओके,
and you have a potential to score A, लेकिन you are standing at C. Why? You are very weak in definitions, okay? You are weak in some calculation. Why? ऐसा क्यों है? इसका ये मतलब है कि यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग. आपकी बेसिक्स क्लियर है, यू नो दैट, यू नो द मैथमेटिक्स, यू नो एवरीथिंग, बट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, सो यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट. ओके, समझ पा रहे हो? Oh, So yes, sir. that's why. So please start practicing, okay? And please make sure to submit the paper. मैंने देखो तुम लोग के ग्रेड अभी से प्रेडिक्ट कर दिए मैं, राइट? और ये इरफान भाई भागे में. इरफान इज स्टैंडिंग ऑन ई और यू, सही है? ये मैं चारों की ग्रेड बता रहा हूँ बी से, सही हो गया? अभी एक और बच्चा आता था यूसुफ, आई थिंक वो प्रॉब्ली ए पे होगा. इट इज लाइक इमाद के साथ है, इमाद से थोड़ा सा ऊपर है, राइट? ही हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेनी थिंग्स. बट यस, वो थोड़ा सा ए पे है. आई डोंट अज्यूम कि उसका बी बने, बट इमाद का भी ए बन सकता है. एफ यू, देखो तुम लोग ने डेफिनेशंस को थोड़ा सा सीरियसली लेना है, सही है? डेफिनेशन जो ए वाले हैं, उन्होंने डेफिनेशन को सीरियसली लेके डेफिनेशन को पहले साइड में करो, राइट? जितनी भी डेफिनेशन है पेपर के अंदर, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी प्रिसाइज, उनको सबसे पहले सॉल्व करो. इमाद, अगर आपने ग्रेड बजाना है, यू हैव टू डू लाइक यू हैव टू गिव अ वेरी प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ दोज एक्सप्लेनेशन वाली चीजें, राइट? एंड गुलमीना, आपके जो एक दो टॉपिक वीक हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस देम आउट, ताकि वो चीज़ें स्ट्रांग हो जाए. यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स कि वो किस तरह से करनी है, राइट? बट ये इलेक्ट्रिसिटी वाले जो आपने भी लास्ट में स्कूल वालों ने कराए, और जो पार्टिकल फिजिक्स उन्होंने जो है ना छक्के मारे में उसमें, तो इसलिए यू हैव टू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये आखिरी वाला 6 का मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, इसके अंदर तुम लोग के में भी एक या दो नंबर आ रहे होते हैं, राइट? सो अगर तो तुमने इसमें एक या दो नंबर लिए, तो इसका मतलब है कि यू मेस्ड अप द पेपर, ओके? एंड एंड जो रेयान, आपके जो चीज़ें आ रही हैं, आपकी कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है, दैट शोज कि आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, ओके? तो इसीलिए बी केयरफुल, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला है. सही है? मेहनत की है, बेकार चली जाएगी. अभी आप सी पे खड़े हो, यू कैन इंप्रूव इट फ्रॉम सी टू ए. याद रखना, इफ यू आर सिटिंग इन द एग्जाम विदाउट डूइंग एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ पास पेपर, डू नॉट एक्सपेक्ट ए, ओके? मैं अभी से बात बता रहा हूँ, डू नॉट एक्सपेक्ट ए. अगर तो 10 साल के पास पेपर करके एग्जाम में नहीं बैठ रहे हो, ए का सोचना भी नहीं, बी का भी नहीं सोचना, ओके? सो प्लीज, जिन्होंने 10 साल के कर रखे हैं, दे कैन ड्रीम ऑफ ए, सही है? वो गोल भी कर सकते हैं. लेकिन जिन्होंने नहीं नहीं किए हुए पास पेपर 10 साल के, प्लीज तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम ए का सोचो या बी का भी सोचोगे, क्योंकि तुम्हारा नहीं बन सकता. बिकॉज यू डोंट हैव एक्सपोजर, यू डोंट हैव लाइक एक्सपोजर टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, नीदर द डेफिनेशन थिंग्स. सो आप उसको इम्प्रूव ही नहीं कर सकते हो, या आप उसको पेपर में लिख ही नहीं सकते हो. यू हैव अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग इट इनकरेक्ट, ओके? तो इस वजह से प्लीज 10 साल के पास पेपर करो, मेक श्योर कि सॉल्व हो, तरीके से सॉल्व हो विद ऑल द वेरिएंट्स, ओके? एंड यू हैव द टाइम, एक महीना है, सुकून से हो जाएंगे. अभी अभी हम 2017 पे खड़े हैं, हमें 24 तक जाना है, ओके? हमने पीछे के 2012 से पेपर सारे किए हुए. मैंने करवाए हुए एक एक वेरिएंट, तुम लोग को मैंने दिए हुए, इमाद ने मुझे सेंड किए हुए. एंड रेयान, आपने कुछ पेपर भेजे थे, गुलमीना का मुझे नहीं पता, उसने भी 3-4 साल के भेजे में, बट उसके बाद मुझे नहीं पता, राइट? बट अभी तुम लोग की स्टैंडिंग ये मैंने तुम लोग को ग्रेड बता दिया. यू वांट टू improve इट, यू कैन improve इट. आई ऑल्सो टोल्ड यू हाउ टू improve इट, बट अब इसके आगे तुम लोग के हाथ में, सही है? चलो, चलें जी. ओके गाइस, टेक Uh, केयर बच्चों. बोलो बोलो. for the definitions from the past papers I've been doing, उसी समय definitions का कर रही हूँ. लेकिन बच्चे, should I do it डेफिनेशंस separately? डेफिनेशंस आप Um, नहीं बता सकते हो. डेफिनेशन के लिए आपको टीचर की हेल्प चाहिए होगी. मैं, देखो, मैं जो तुम लोग को बोल रहा हूँ ना, पेपर मुझे भेज दो. आई जस्ट वांट टू चेक द डेफिनेशंस. देखो, डेफिनेशंस के लिए तुम्हें एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी. अगर तुम मुझे नहीं भेजना पेपर, ना भेजो, कोई मसला नहीं है. एग्जामिनर रिपोर्ट खोलो, उसकी डेफिनेशन देख लो. वो तुम्हें ये बता देगा कि दीज आर द करेक्ट थिंग, दीज आर द इनकरेक्ट थिंग, राइट? क्योंकि देखो, जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मैं डेफिनेशन लिखता था, तो मुझे लगता था कि यार ये अंग्रेजी सही तो है जो मार्किंग की में लिखी है, बट जब मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट से उनको पढ़ा है, तो वो गलत थी, वो एक्सेप्टेबल नहीं थी. बिकॉज यू शुड हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रिसिशन इन योर एएस लेवल, और वो आपको एग्जामिनर बताता है कि ये वाली वर्डिंग गलत है, राइट? जब आपको मार्किंग की सिर्फ बताती है ये सही है, ओके, एग्जामिनर रिपोर्ट बताती है कि ये गलत ये है, राइट? सो आपको पता चल जाता है कि वेदर योर आंसर फॉल इनटू द इनकरेक्ट रीजन और द करेक्ट रीजन, राइट? तो उससे आपको पता चलता है, राइट? सो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर तो तुम्हें ख्वारी करनी है, तो एग्जामिनर रिपोर्ट खोलो, देख लो, मुझे कोई इशू नहीं, राइट? बट मैं 21 भी करा रहा हूँ रात वाले बैच में, 22 करवा रहा हूँ तुम लोग को, सही है? 23 पहले करवा चुका हूँ, उसकी भी एग्जामिनर रिपोर्ट और सब कुछ मैं करवा के चेक करूँ, तो मुझे मुझे आइडिया है कि वो एग्जामिनर किस किस तरह के वर्ड्स को इंक्लूड करे, एक्सक्लूड करे,
राइट। सो मैंने जो तुम्हारी चीज़ें चेक करनी है ना, वो सिर्फ तुम्हारी डेफिनेशन ही चेक करनी है, राइट। ताकि तुम्हारे डेफिनेशन के अंदर यूजलेस मार्क ना करें, राइट। बस मुझे ये चेक करना है, तुम लोग के जो पेपर तुम लोग मुझे भेज रहे हो डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन मुझे चेक करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन तुम खुद भी चेक कर सकते हो, राइट। तो बस ये इस वजह से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि पासवर्ड भेज दो। तुम टीचर से तुम किसी से भी जो चीज़ पूछ रहे हो ना, वो तो तुम्हें बता देगा। तुम इवन मुझसे भी कैलकुलेशन पूछोगे, मैं तुम्हें बता दूंगा। बट अगर तुम मुझे पासवर्ड भेजोगे तो मैं तुम्हें वो चीज़ बता पाऊंगा जो कि तुम्हें लग रहा था कि तुमने सही किया, बट एक्चुअली में वो सही नहीं है, सही है। बस ये मकसद है, सही। अब वो तुम मुझसे करवाओ, तुम कहीं से भी करवाओ, उससे मुझे कोई मसला नहीं है। बट वो होना चाहिए, राइट, क्योंकि ए लेवल्स के अंदर आपको ग्रेड इतने आसानी से नहीं मिलेगा। ओके, समझ पा रहे हो? जी सर, I haven't been able to send you the past papers क्योंकि फोन का स्टोरेज अभी फुल हुआ हुआ है, and I haven't been like टाइम नहीं मिला हुआ मुझे क्लियर करने का। तो मैं ट्राई करूंगी आपको पिक्चर्स भेज दूंगी। ब्रो, मेल अब मेल कर दो definitions पिक्चर, चलो पिक्चर भेजो, कुछ भी करके भेजो, कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम क्या कर रही हो, राइट। सही सर। तो ये है। तो चलो खैर, अब इस तरह की मैंने एक और क्लास भी रखनी है नेक्स्ट वीक में, मुझे उससे पता चल जाएगा कि तुम लोग की तैयारी कितनी। मैंने नेक्स्ट सैटरडे इसी तरह की दोबारा क्लास रखनी है, मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग की कितनी कवर अप होके आ रहे हो, सही है। एंड रेयान, स्पेशली मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट सैटरडे को मैंने क्लास करनी है, उसमें मैंने इसी तरह से सॉल्व करवाना है। ये सी इम्प्रूव हो जाना चाहिए नेक्स्ट सैटरडे तक, ओके। और आपने उसके लिए जो है ना, तकरीबन मैंने अभी ये पेपर तो देने 2017 और 18 के 2 साल के पेपर मिलेंगे इस वीक के अंदर। सही है, तकरीबन 8 पेपर मैंने देने हैं होमवर्क के तौर पे। और बेटा अगर वो तुम नहीं करके आया ना, फिर तो तुम देखो मैंने क्या करना है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? Yes, I got it. हाँ बेटा, इंसान बन जाओ, अब इंसान बनने का टाइम आ गया, बहुत बहुत थोड़ा सा टाइम है, वरना फिर सीआईज वाले जो है ना गोरे इंसान बनाएंगे तो बड़े तकलीफ होगी, समझ रहे हो, लेकिन चीज भी नहीं सकोगे। खैर, चलें, बस एंड करते हैं। तो अभी मैंने ये होमवर्क दिया, मुझे कल की कल मिल जाना चाहिए, कल की क्लास से पहले पहले, ओके। चलो, चलें, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। enough अल्लाह sir। हाफिज, अल्लाह हाफिज, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।